Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, today's chapter that we are going to start is the 9th chapter of your science book, and it is on dispersion of light. You have studied some of the properties of light. The first one was reflection, which you studied in the earlier classes. Now we will be studying refraction. This is the first topic, 9.1 of chapter 9th. What is refraction? Whenever this word refraction comes into your mind, just think it means bending of light. रोशनी का अपने रास्ते से थोड़ा सा झुक जाना, भटक जाना, डायरेक्शन को चेंज कर लेना, इसका नाम है रिफ्रैक्शन. The simplest definition is the bending of light when it passes from one medium to another is known as refraction. इतना सा याद रखना है, जब रोशनी एक वसीले में से, now what is a medium? This is this air in which light passes from. When you switch on a torch, this is one medium. Suppose in front of it comes a glass window, then glass is the second medium. So refraction of light always takes place when light traveling in one medium, which is transparent, enters into another medium which is also transparent. So I will now repeat this definition for your convenience. The bending of light यानी रोशनी का अपने रास्ते से झुक जाना, from its straight path, अपने सीधे रास्ते से लाइट का बेंड हो जाना, when it passes from one transparent medium into another is called refraction. अभी आप इसमें देखें कि जो मेन पॉइंट्स हैं, नंबर 1, bending of light. This is the first point that you should have in your mind. Second is when it passes from one transparent medium into another. यानी ये दो बातें आपने ज़हन नशीन करनी है और हर डेफिनेशन में लिखनी है. बिकॉज बेंडिंग का कॉन्सेप्ट तो ये बताया आपको मैंने, इट सिंपली मीन्स changing its path, changing its direction, bending on it from its path. But when does it occur? This phenomena only occurs when light traveling in one medium enters into another transparent medium. मसलन हवा से शीशे में, या हवा से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में, या हवा से पानी में, या हवा से किसी सफ़ेद किस्म के ऑयल में. These are all different medium, but the condition is that the medium should be transparent, जिसमें से रोशनी गुजर सके. Opaque medium नहीं होना चाहिए. So what is refraction? The bending of light अपने सीधे रास्ते से, from its straight path, when it passes from one transparent medium into another. बस ये याद करना है कि बेंडिंग ऑफ लाइट है, दूसरा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है. दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. अर्लियर यू स्टडीड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ये था कि जब रोशनी की शुआ एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर टकराती है तो वापस आ जाती थी उसी सेम मीडियम में. दैट वाज रिफ्लेक्शन. नाउ इट इज रिफ्रैक्शन. Now properties of light क्या है? I just wanted to go over this thing कि लाइट की खसूसियात क्या है. पहली, लाइट डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल. पहली बात यह है कि रोशनी को गुजरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूरज से शुआएं और सितारों से और गैलेक्सीज से जो आपके पास आती है वो सारी की सारी शुआएं, इट पासिस थ्रू वैक्यूम. सो देर इज़ नो मीडियम. इट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम. वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि मुझे गुजरने के लिए मीडियम चाहिए.
So the first thing is the property of light is light does not need a material medium. इसके बगैर भी हो जाती है. Second property, light travels at different speeds in different mediums. Now this is important to understand कि जब रोशनी एक मीडियम से ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो उसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है. मुख्तलिफ मीडियाज में रोशनी की रफ्तार मुख्तलिफ होती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन आई विल टेल यू, लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स. हर मीडियम में उसकी रफ्तार एक नहीं जाती. तीसरी बात, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, और खला में रोशनी जो है सबसे तेज गुजरती है. द फास्टेस्ट स्पीड जो है वो इसकी वैक्यूम में होती है. दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. वन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम into another transparent medium, it changes direction. Two, it also changes its speed. उसकी स्पीड भी मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ मीडियम में. तीसरी, सबसे ज़्यादा उसकी रफ्तार, द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम. फोर्थ, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है? When light passes from one transparent medium, ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसमें से रोशनी गुजर सके, जो कि क्लियर हो, जिसमें से आप जैसे शीशा होता है उसको खिड़की से बाहर आप देख सकते हैं क्या चीज़ है, वो ट्रांसपेरेंट है. व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, इट चेंजेस द स्पीड एंड डायरेक्शन. ये रेपिटेशन है उन्हीं दो पॉइंट्स का. इसको अलग डिफाइन इसलिए किया ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए कि दोनों चीज़ें चेंज होती हैं इसमें. इट चेंजेस स्पीड एंड डायरेक्शन. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. ये बेंडिंग जो है इसी का नाम रिफ्रैक्शन होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करने का नाम. और पांचवी खसूसियत क्या है इसकी? व्हेन लाइट ट्रेवल्स एट 90 डिग्रीज, जब रोशनी की शुआ अगर ऐसे जाके शीशे पर टकराती है, यहाँ पर अपने टॉर्च पकड़ी या मोमबत्ती या माचिस आपके हाथ में, इफ द लाइट गोज फ्रॉम हेयर एट एन एंगल एंड इट इम्पिंजेस अपॉन द सेकेंड मीडियम, फिर वो डायरेक्शन चेंज होगी. लेकिन अगर 90 के एंगल पर जाएगी, 90 के जाविये पर आप उसको सीधा टॉर्च को ऑन करें तो फिर वो उसमें से बेंड नहीं होती, इट गोज स्ट्रेट. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. व्हेन लाइट फॉल्स एट 90 डिग्रीज, इसका मतलब, इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर, 90 के जाविये पर टू द सरफेस ऑफ द मीडियम, किसी भी दूसरे वसीले के सतह के ऊपर, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, तो उसकी जो डायरेक्शन चेंज नहीं होती. सो प्लीज रिमेंबर these 5 points. 1, when light travels from one medium to another, it changes direction. 2, when light passes from one medium into another transparent medium, it changes speed, and this bending of light is known as refraction. 3, it's a property, a very important property of light, that in vacuum the light travels at the same speed. There is no change of direction. It's the fastest over there in vacuum. And fourth is that when light falls at 90 degrees on the surface of the other medium, ये ऐसी ही बात है जैसे आपने यहाँ से बॉल फेंका, जब 90 के जाविये पर गेंद दीवार पर गिरता है तो सीधा वापस आ जाता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता. बट जब आप एंगल के ऊपर दीवार पर फेंकते हैं तो वो उस तरफ से निकल जाता है. सो इट्स इन द सेम वे लाइट ऑल्सो acts in the same manner. Now it is a simple experiment by which you can prove that light bends actually when it passes from one medium to another. So ये एक हमारे पास glass slab है. Okay, this is a glass slab. Let's call it ABCD. Let's call it ABCD. ABCD is a glass slab. यानी एक शीशे की छोटी सी स्लैब है, ईंट सी है, जैसे कि ये स्लैब होती है. ये लकड़ी की स्लैब है, वो शीशे की स्लैब है. और शीशा is transparent. Please remember, this glass slab is transparent so that light can pass into it. So take a glass slab and let a ray of light EF, let us call it EF. Let ray of light EF be incident upon the surface of the glass slab AB.
आप एसेस करें कि आपके पास एक रोशनी की शुआ, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे? इंसिडेंट का मतलब है जो वकूअ पजीर होती है। जैसे आप कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंस सुनाओ, तो इंसिडेंस से हमने इंसिडेंट बनाया है। सो इंसिडेंट रे क्या चीज़ है? इट इज़ दैट रे विच इज़ इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ ए ग्लास स्लैब। हवा में जा रही थी, एयर इसका ये मीडियम था। दिस मीडियम इन विच इट इज़ ट्रेवलिंग इज एयर, and it enters the second medium, which is glass. Now it is a second medium. So while traveling in the air, in air, this ray of light EF is known as incident ray. When it falls at this point, the point of incidence, it should go straight like this, but it is not going straight. The actual path should have been like this, but it is not going like this. It bends, and it bends towards the normal. This n and n dash is the normal. नॉर्मल का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में आपने एक 90 का ज़ाविया बना दिया। यू ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस n and n dash is known as normal. Now the path of the ray EF was straight, so instead of going straight, when it enters the second medium, which is glass, it bends towards the normal, and it meets this point of the glass here, O dash. Let it be known as O dash. This is O and that is O dash. Now this incident ray, this ray which is called, this ray you can name it O and O dash or EG, this ray FG, this ray FG or O dash, this is the refracted ray. तो ये जो शुआ है ये refracted है. This is the refracted ray. This is called the incident ray, the refracted ray. And this angle which it makes with the normal at this point is known as R, and this is called angle of refraction. I is the angle of incidence. So the ray of light goes like this. When you try to look from this side, you will see it like this. So draw this line, and then move your head here and try to see this. It emerges out like this. So this is known as the emergent ray. GH is known as emergent ray. So what is emergent ray? Emergent ray is that which is emerging out. Refracted ray is this one, O to G or FG. This is the refracted ray, and EF is the incident ray. So the incident ray EF impinges or is incident upon the surface of glass slab AB, changes its path and goes like this. This is the angle of incidence which it makes at the normal at the point of incidence, and this is the angle of refraction, and then it again moves out, and this is the angle which it makes is known as angle of emergence. This angle is known as angle of emergence. So GH is the emergent ray, and this you can prove by how you can put a pin over here and you can put a pin over here and see from this direction, and you will see that the ray of light will not be visible here, but it will be visible here. So it comes here, again put another pin over here, and then put a pin over here, and you will see when it comes out, this is the line of that it is following. So let us now give you the definition of some of the terms that I have used. One, incident ray. What is incident ray? The ray of light that falls on surface of other medium. यानी ये हवा में जा रही थी रोशनी, जैसे हवा में मैंने इधर से टॉर्च लगाई. This is known as incident. The ray of light that falls on this surface of another medium. जो दूसरे मीडियम की सतह पे आके गिरती है रोशनी की शुआ, उसे कहते हैं इंसिडेंट लाइट है. This is incident ray. This is the refracted ray. What is the definition? The ray of light that changes its path. यानी refracted ray कौन सी है? वो ray जो कि अपना रास्ता change करती है, अपना रास्ता तब्दील करती है. So this is refracted ray. And what is emergent ray? The ray of light that comes out of the glass slab is emergent ray. This is emergent ray. Okay? With that, the ray of light that comes out of it. What is I? The angle between normal and incident ray.
the angle between normal NO and incident ray is known as angle of incidence. So I is the angle of incidence. What is R? The angle between the refracted ray and the normal at the point of incidence is known as angle of refraction. And what is angle of emergence? The angle which the emergent ray makes with the normal at the point of incidence is known as emergent ray. So I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. EF is the incident ray, FG is the refracted ray, GH is the emergent ray. I is the angle of incidence, R is the angle of refraction, E is the angle of emergence. So I will go over these things again, and please see now. What is refraction? What is refraction? The bending of light from its straight path when it passes from one transparent medium into another is known as refraction. So क्या होती है refraction? लाइट का बेंड होना अपने असली रास्ते से जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, लेकिन शर्त क्या है? दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइट डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. वो इसके बगैर भी ट्रैवल कर लेती है. 2. लाइट ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी मुख्तलिफ मीडियम्स में इसकी मुख्तलिफ स्पीड होती है. लाइक एक मीडियम हवा है, दूसरी मीडियम जो हो सकता है ऑयल है, तीसरा मीडियम पानी, चौथा शीशा, पांचवा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी हो सकता है, छठा हीलियम गैस का भी हो सकता है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पड़ी हो सारी के साथ. थर्ड प्रॉपर्टी इज लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, और वैक्यूम में सबसे ज़्यादा. चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? लाइट ट्रेवल्स व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट चेंजेस स्पीड एंड डायरेक्शन. This bending of light is called refraction. So refraction phenomena में दो चीज़ें होती हैं. Two things occur. One, bending of light. Two, change of speed. And these properties which I have given you about light are those properties which are in relation to refraction. रिफ्रैक्शन के नुक्ता निगाह से जो उसकी खसूसियात हैं वो हमने लिखी हैं यहाँ पे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लिखी हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. हमने दूसरे फिनोमेनस को स्टडी नहीं किया, लाइट के दूसरे फिनोमेनस भी होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन लाइट फॉल्स एट 90 degrees to the surface of the medium, it does not change direction. And then there is a small experiment which says take a glass slab A, B, C, D, let a ray of light EF be incident upon it, it will refract, and the refracted ray goes on the path FG and emerges out as emergent ray GH. Angle of incidence is the angle which the incident ray makes with the normal. Angle of refraction is the angle which the refracted ray makes with the normal, and angle of emergence E is the angle which the emergent ray makes with the normal. And this is the path of light EFGH. So light goes like this, and it should have gone like this, but because of this glass medium it changed direction. It should have gone like this, but because of this air medium it changed direction like this. So please make good notes of it and draw these diagrams, make neat clean headings over there. Give me a phone call at 033 5516358 or 0336 547 3312 for any difficulty that you have, and you are welcome to ask any kind of question. Even if you think this question is very basic, do not hesitate to ask. Thank you very much.